Bismillahirrahmanirrahim. By the name of Almighty Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, today's lecture is very important for Federal Board and PD Board students because linear programming, we have discussed the word problem for long questions. So, question number 4 KPK Board 9.2 exercise. A company manufactured two models of bicycles, Model A and Model B, by using two machines M1 and M2. Machines M1 has at most 120 hours available and machine 2 at most 144 hours. So, manufacturing a Model A bicycle 5 hours in machine 1 and 4 hours in machine M2, and similarly and bicycle B 4 hours M1 and 8 hours M2. If company gets the profit of 40 per model A bicycle and 50 per model B bicycle, how many of each model should be manufactured for maximum profit? So very easy students, ये जो इसमें वर्ड प्रॉब्लम होती है, इस लेक्चर को मैं उर्दू में तब एक्सप्लेन कर रहा हूँ साथ के कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर उर्दू में अच्छा एक्सप्लेन होता है, आप ये वर्ड प्रॉब्लम को उर्दू में एक्सप्लेन करें। वर्ड प्रॉब्लम भी इंग्लिश में, अगर मैं इंग्लिश बोलूँगा तो फिर आपको सही समझ नहीं आएगी। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपने गेस करना होता है मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे वो कहता है जी कि हमारे पास दो तरह के मॉडल है, मॉडल ए एंड मॉडल बी। हम यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन हमने एक्स वाई की फॉर्म में पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स को हम यूज कर लेते हैं किसके लिए, मॉडल ए के लिए, और y को हम यूज कर लेते हैं किसके लिए, मॉडल बी के लिए। करना आपने इस तरह के पहले क्वेश्चन किए हुए आपने, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम नहीं, असल चीज होती है इक्वेशन बनानी। अगर इक्वेशन ठीक बन जाएगी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे वो कहते हैं जी कि M1 और M2 दो तरह की मशीन है जिसके जरिए बाइसिकल बनाई जाती हैं, ठीक है, और मैक्सिमम आपके पास 144 आवर्स है और 120 आवर्स है मशीन ए और बी के लिए। तो प्रॉफिट की बात हो रही है तो 40 मॉडल ए के लिए और मॉडल बी के लिए। मॉडल ए का नाम दिया, इट्स मीन ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा f ऑफ x y इज इक्वल टू 40x प्लस 50y। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसके प्रॉफिट को आपने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। अब इसमें जो कंडीशन दी हुई है M1 M2 के लिहाज से, तो वो आपने क्या करनी है जी, देखें M1 में वो कहते हैं जी कि 5 आवर्स इन मशीन M1, तो क्या आएगा 5x प्लस, इसी तरह 4 आवर्स इन मशीन M2 4y, और टोटल जो दिया हुआ है उसने मॉडल ए का M1 का वो दिया हुआ है 120 आवर्स, तो लेस देन और इक्वल टू 120, मतलब इन दोनों के लिहाज से मॉडल में 120 घंटे से ज्यादा वक्त आप नहीं लगा सकते। अब आगे आता है सेकेंड इक्वेशन जो बनती है हमारी, वो बनेगी जी 4 आवर्स मशीन 1 में 4x प्लस इसी तरह 8 आवर्स दिया हुए हैं मशीन 2 में, और टोटल जो बी का मॉडल का जो बन रहा है वो उसने दिया हुआ है 144 आवर्स। ये क्वेश्चन है जिसको आपने मैक्सिमाइज करना है, और जब भी क्वांटिटी की बात आती है तो हम खुद से कंडीशन लगाते होते हैं यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रॉफिट है, जाहिर बात है प्रॉफिट और लॉस की जब बात होती है और नेगेटिव में तो आप नहीं दे सकते, इसलिए हमारे पास कोई भी वैल्यू x और y की नेगेटिव ना हो। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी अपने इक्वेशन को। तो सबसे पहले क्या आएगा, एसोसिएटेड इक्वेशन 1, एसोसिएटेड इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 जो इनइक्वालिटी है आपकी पहले वाली, उसको आप इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा जी 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 120। तो आपने x को जब 0 पुट करना है, 5 into 0 plus 4y is equal to 120. So we get 4y equal to 120 and y is equal to 120 by 4. Y is equal to 30. Point becomes x0 and y 30. Similarly, put y is equal to 0.
So 5x equal to 120, x equal to 120 by 5, x is equal to 24. Point becomes 24 and 0. Finally, we check origin test for shading. So, origin test. For origin test, we take x is equal to 0 and y is equal to 0 in inequality number 1. So, here 5 into 0, 4 into 0, this is 0 which is less than 120. So this inequality satisfies the origin test, that's why we called it is true. Similarly, we discuss second inequality. Associated equation 2. So 4x plus 8y is equal to 144. So here x is equal to 0. 4 into 0 plus 8y is equal to 144. Y is equal to 144 by 8. Y is equal to 18. And point becomes 0 and 18. Put y is equal to 0. So 4x is equal to 144. X is equal to 144 by 4. X is equal to 36. So point becomes 36 and 0. So finally origin test. Origin test, we take x is equal to 0 and y is equal to 0. So inequality becomes 4 into 0, 8 into 0, which is 0 less than or equal to 144. This inequality also satisfies the origin test, that's why we say this is true. Now graph. So take two mutually perpendicular lines, x-axis and y-axis. This side is positive x-axis and this side is negative x-axis. Similarly, this side is positive y-axis and this side is negative y-axis. We have maximum point is 30. So we take interval 5, 10, 15, 20, 25 and 30. 5, 10, 15, 20, 25 and 30. First point is 0 and 30, by 30 this one. Second point is 24, 25, nearest to 25. So this is our first line. Because we have restricted from this condition, x greater than 0, y greater than 0. That's why we don't need a quadrant for second, third or fourth. So feasible region in this quadrant. We have already discussed about the feasible region in my previous lecture. The region where only first quadrant involved, this region is called feasible region. So second equation is 0 and 18. This one and 36 and 0. X 36 this one. So this one. Both inequality satisfied, that's why nearest region towards the origin. So this is our shaded region, feasible region. So here we have corner points and f of xy. F of xy is 40x plus 50y. We have 1, 2, 3 corner points. First corner point is this, x is equal to 0 and y is equal to 24. Nahin, x is equal to 0, second equation, 18, 0 and 18. First corner point, second corner point is this, x is 24 and y is 0, and third is this point of intersection. For this you have to solve these two equations. So equation 1 is 5x plus 4y
equal to 120 and 4x plus 8y equal to 144. If we multiply equation 1 by 2, so we get 2 5 the 10x, 2 4 the 8y, 1 240. And now subtract this equation by equation 2. 4x plus 8y is equal to 144. Calculator please. Sign change. 10 minus 4, 6x. 240 minus 144. 240 minus 144. 96 divided by 6. 16. X is 16. Now put this value in equation number 2. 4 into 16 plus 8y is equal to 144. 8y is equal to 144 minus 64. 144 minus 64. 80. 80. And this means y is equal to 10. So our last point is x is 16 and y is 10. Now put all these points into main function, objective function. 4 into 0, 50 into 18. 50 multiplied 18, answer is 900. 900. Similarly, 40 into 24, 960. 960. And finally 40 into 16 plus 50 into 10. 40 into 16 plus 50 into 10. 1140. So this is our maximum value. So here you can say that f has maximum value 1140. At which point? At point of intersection. This point 16 and 10. So student, here you can see that this question is also very easy. Only you have to make equations according to the condition or what problem. Inshallah, we have one more lecture about this topic tomorrow. Subscribe our channel and also comment if you seen any type of mistake. Thank you so much.